Very good afternoon, students. Now we will be going for completing the second biomolecule part 2 basic. Okay, we completed biomolecule part 1, and in biomolecule part 1 we completed the basic of proteins, just the basic. Now this is not the main part. Okay, protein we completed at basic level. What is protein? What is, we need to understand what is protein. That is all. We haven't went for amino acid types, we haven't went for detailed peptide bond structure, we haven't went for that. We are going to this, just going for this introduction. So we discussed that we will be going for three basic part, that is basic learning of biomolecule 1, biomolecule 2, biomolecule 3. I am trying that I will be concluding all of the three series of biomolecule within two. Okay, so this, in this part we need to understand the basics of all of this. So if we go for biomolecules, so there we will be having the second macromolecular form, that is the nucleic acid. Now, as discussed, nucleic acids are polymeric substances, and nucleic acid के अंदर polymers, this nucleic acid having monomers as nucleotide. So what is this thing? Suppose again this is the long chain in which this overall long chain is the nucleic acid, and the constituent monomeric units are the nucleotide. Okay, so nucleic acids are two types. Number one is DNA and number two is RNA. So DNA is deoxyribonucleic acids, whereas RNAs are ribonucleic acids. Okay, so DNAs are made up, DNA and RNA both are nucleic acid, so they are both polymers. So as nucleic acid is made up of polymer, or the nucleic acids are polymer, and then the nucleotides are the monomeric forms. So DNA, as they are also polymer, so उनका monomeric form जो nucleotide particle होगा, that will be known as deoxyribonucleotide, simple. And RNA का होगा राइबोन्यूक्लियोटाइड. अभी क्या है, हम लोगों को कुछ क्वेश्चन समझना है. दैट इज व्हाट इज दिस डीएनए एंड आरएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना है. वेयर वी कैन फाइंड दिस. थर्ड, what are the structures with respect to this, and fourth, what they do, why they are known as the basics. Or here we will be थोड़ा बहुत understanding the genes and उसके साथ थोड़ा बहुत we will be discussing central dogma, the one way flow of information. Okay, so let us continue with our journey regarding learning is the most important thing for us. So
मैं पहले भी बोलता था, अभी भी बोलता हूँ, वी थिंक not from our mind. There is nothing called this pumping. This heart will is always go for the pumping mechanism of blood. We always think from our head. We always have this emotional thing with respect to our head. There is always this neurons, there is always this endocrine functions, there is that makes us happy, that makes us sad with respect to different stimulus. But what we can do, we can go for the power of knowledge, that is most important. So whatever exams you are preparing, either you are preparing for the CSIR net, either you are preparing for the NEET, these are the basic parts that you cannot skip. And I will be making separate videos regarding the question answer of CSIR net, the question answer of NEET, the question answer of KVPYs, the question answer of agricultural examination, the question answers of this B farm, this M related to the entrance of M farms, that everything I will be making different videos. So stay tuned, students. So पहले we will be discussing the DNA. अभी DNA में क्या है? DNA नॉर्मली जो DNA स्ट्रक्चर होता है वहां पे ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे होता है, दैट इज यहाँ पे there are many, suppose I'm just 2D drawing this, there are many nucleotide chains. Okay, one nucleotide, so one nucleotide chains are there, these are forming the one polynucleotide strand. So this we can say that as many nucleotides are there, so this we can say that polynucleotide. Now here two polynucleotide chain 1 and polynucleotide chain 2, this will be making the total DNA structure. Okay, so this will be making the total DNA structure. So DNA normally one double stranded DNA will be having two polynucleotide chains, and they will be joining by different bonds. We will be understanding different bonds within DNA. So first we need to describe the basic or the unit parts. Now what we discussed with respect to DNA and RNA, one unit is deoxyribonucleotide. प्लीज बच्चों यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड मत बोलना, क्योंकि और स्टूडेंट्स एज वेल, वो न्यूक्लिक एसिड मत बोलना, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड इज द ऑल ओवर द पार्टिकल्स, ऑल ओवर द मॉलिक्यूल, ऑल द मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल नेम इज न्यूक्लिक एसिड and the constituent unit is nucleotide, and this is ribonucleotide for RNA. So DNA के अंदर this one unit of deoxyribonucleotide and one unit of ribonucleotide, it is for DNA, this is for RNA. So they are made up of one 5 carbon sugar, which is known as deoxyribose sugar. और यहाँ पे भी इन केस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे भी एक 5 कार्बन शुगर विल बी देयर, which is known as ribose sugar. Now we need to go for the structures. So यहाँ पे if we draw one pentagonal ring, यहाँ से this carbon is the first prime. In each part there is the carbon, here, here, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH. This is the first prime carbon. Second prime carbon के अंदर OH and H will be there. Third prime के अंदर OH and H will be there. Fourth, this is hydrogen over here, and this is. So if we go for नेमिंग दिस, यहाँ पे देखो कितना कार्बन हो गया, यहाँ पे पहले वाले टर्म के ऊपर, सॉरी, यहाँ पे, ठीक है, this is the first, this is the second, this is the third,
this is the fourth, this is the fifth. So second में अगर OH आता है, then it is ribose sugar, and whenever we will be focusing on deoxified ribose, so यहाँ पे अच्छे से देखना, यहाँ पे कि सेकेंड जो कार्बन होता है ना, उसमें OH की जगह पे सिर्फ H होता है, एंड यहाँ से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर, एक ऑक्सीजन एटम ये बाहर चला जाता है. दिस ऑक्सीजन एटम इज गेटिंग आउट, सो दिस इज नोन एज डीऑक्सीफाइड शुगर. ठीक है. सो यहाँ पे कार्बन रहेगा, यहाँ पे भी कार्बन रहेगा, यहाँ पे OH ग्रुप रहेगा. दिस कार्बन इज द थर्ड, this carbon is the fourth, यहाँ पे CH2OH, this will be the fifth carbon. ठीक है. So यहाँ पे this is the deoxyribose, this is the ribose sugar. Now अगर हम दूसरा पार्ट देखते हैं यहाँ पे, अभी मैं इसको पूरा डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि ये कंपोनेंट्स वी आर डिस्कसिंग. सो अगर दूसरा पार्ट हम देखते हैं यहाँ पे, इससे राइबोस शुगर हो गया, देन 5 कार्बन, दिस इज राइबोस. हाँ, मिनट. तो अगर यहीं पे आते हैं हम, उसके बाद 1 यूनिट में 1 दिस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स. एक में 5 कार्बन डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है. नाइट्रोजन बेसिस विल बी देयर, and this nitrogen bases are 2 type. One is known as purine and second is known as pyrimidine. This is very important, maiden, and this is the basic for everyone. Purine के अंदर क्या होता है? Purine is known as the double ring structure and pyrimidine is known as the single ring structure. So ये डबल रिंग जो होता है ना, ऐसे होता है. एक कार्बन हो गया, एक नाइट्रोजन हो गया, फिर एक कार्बन, एक नाइट्रोजन, ऐसे करके यहाँ पे 2 कार्बन आ जाएगा और इससे नाइट्रोजन, इधर कार्बन, यहाँ से ऐसे दिस विल बी फॉर्म लाइक दिस, ऐसे नाइट्रोजन आके यहाँ से जुड़ जाएगा. So it is the double ring. Q double ring, one ring, second ring, and each nitrogen will be having lone pair and one singly hydrogen is left. So purine, इसके अंदर double ring structures are 2 type. One is adenine and second is guanine. In case of DNA we are saying. ठीक है. एंड pyrimidine ये होता है ना एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, एंड इसके अंदर दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है. वन इज थाइमिन एंड सेकेंड इज साइटोसिन. ठीक है. सो adenine is represent as capital A, guanine is represent as G, thymine is represent as T, and cytosine is represent as C. और ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पे देखें तो एक तो हो गया 5 कार्बन राइबोस शुगर आरएनए के अंदर. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्यूरिन भी नाइट्रोजन बेस जो होता है उसके अंदर एडेनिन एंड गुआनिन इज देयर. मगर जब हम pyrimidine we want to describe, so pyrimidine के अंदर साइटोसिन आता है, मगर थाइमिन की जगह पे यहाँ पे एक नाइट्रोजन ग्रुप आ जाता है जिसको हम यूरासिल बोलते हैं. सो URACIL इज द pyrimidine स्ट्रक्चर. तो अभी इतना हो गया, तो वी विल बी गोइंग फॉर द थर्ड कंपोनेंट विच इज, सॉरी ये एक मिनट रुको, नाइट्रोजन बेसिस अगर हो गया, देन वी विल बी गोइंग फॉर द थर्ड कंपोनेंट. That is, in a nucleotide there are 3 components. So first and second component will be this, और अगर हम थर्ड कंपोनेंट देखते हैं यहाँ पे,
सो ये आता है पहले, ठीक है। सो दिस इज नाइट्रोजन बेसिस। वाई नाइट्रोजन बेसिस? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, दैट्स वाई इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स, दैट्स वाई इट इज नोन एज नाइट्रोजन बेसिस। एंड थर्ड आता है फॉस्फेट। Now we know that what is this phosphate is coming from phosphoric acid. Phosphoric acid is H3PO4. अभी थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में अगर आ जाए तो फॉस्फोरस इट विल बी हैविंग डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन इज टेट्राहेड्रल फॉर्म, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 और इनका बॉन्ड एंगल आ जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। व्हेनेवर दिस रिलीजेस H प्लस, ठीक है, यहाँ से H प्लस निकल के आता है, यहाँ से H प्लस निकल के आता है, देन इट क्रिएट्स द PO4 3 माइनस। यहाँ से निकल के आएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नॉर्मली क्या होता है कि वन फॉस्फेट मॉलिक्यूल से normally two hydrogens are released and one remains, or in many cases two hydrogens are there and one H plus is released. So agar there are two H pluses or the two hydrogen OH groups are still there, they will be helping in forming different bonds, and the remaining H plus which will be giving rise to the negative charge of oxygen, that will be contributing to all over DNA molecule getting the negative charge. Due to this phosphate having negative charge, all the DNA molecules will be negative in charge. And we will be detail understanding this whenever we will be going for the nucleosome model, why DNA is negative because of this phosphate and why it is wrapping over the basic amino acid, that is this positively charged amino acid, and why it is wrapping over the histone molecule and giving the code of life, we will be discussing. So RNA के अंदर भी यहाँ पे ये phosphate will be there, which is also giving it a negative part. So these three component and these three components are there. We need to elaborate now the part of DNA, that is the bond present inside the DNA and how it works. Okay, so in this I will be saying, चलो first we complete this. Suppose एक DNA structure हम लेते हैं, a BDNA structure or the DNA structure which is described by Watson and Crick. अगर हम लोग ऐसे एक DNA structure लेते हैं तो इसके अंदर ऐसा दिखने को मिलता है, एक और there is 5 prime phosphate, एक और उसके corresponding उसके ठीक नियरेस्ट पोजीशन पे और अल्टरनेटिव पोजीशन पे 3 प्राइम OH होता है, और जो ये पोलैरिटी है ना, ये पोलैरिटी मेंटेन करके whenever this comes over here, then it is giving this 3 dash 3 prime, not dash, 3 prime OH, and there it is giving 5 prime phosphate. Now if we study this, we will be going for this particular part, how this, if we go for elaboration of this, we elaboration of this, then we will be giving this 5 prime में क्या है, पहले यहाँ पे एक शुगर मॉलिक्यूल रहेगा। अच्छा, डीएनए के अंदर दिस शुगर मॉलिक्यूल इज फॉर्मिंग द बैकबोन, ओके, दिस इज फॉर्मिंग द बैकबोन, एंड अंदर वाले पार्ट में, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, अंदर वाले पार्ट में देयर इज द नाइट्रोजन बेसिस। with respect to this, sugar molecules are present like the skeletal part, और इसके बाहर phosphate groups are there, phosphate group will be creating this layers, और अंदर वाले पार्ट में सपोज यहाँ पे एडेनिन हो गया तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री साइड पे थाइमिन विल बी हैविंग डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे करके आएगा। अभी डिटेल स्ट्रक्चर देखना है, सिर्फ ये समझ लो कि बाहर वाले द बैकबोन फॉर्मिंग एलिमेंट्स आर द sugar part and the phosphate part,
and the insider element is this nitrogen base part. Okay, so insider part is the nitrogen base part, outsider part is the sugar and phosphate parts. Now we will be going for elaboration. If I just again draw, as this drawing is a little bit messy, so if I go for again drawing this, we will be having this structure. Suppose I'm drawing over here. So अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट, यहाँ पे 3 प्राइम OH आता है, सो इस जगह को अगर हम इलेबोरेट कर रहे हैं, देन वी आर गेटिंग दिस पार्ट्स. ओके, 5 प्राइम फॉस्फेट में ऐसे होगा. Now this is the first carbon. This carbon will be having OH bonds. This OH, यहाँ पे adenine or thymine, whatever this is, they will be having, suppose here is adenine. So whatever this is, there will be having N. यहाँ पे N will be attaching with 2 bonds with different carbons and one H will be there. From here, release of one water molecule, and they will be forming this glycosidic bond within this nitrogen molecule and the first nitrogen molecule of bases, and here there they will be forming over here. This first carbon will be having this bond. Okay, here it is also H. The first carbon is having bond with the nitrogen molecule of purine or pyrimidine, and this bond will be known as N-glycosidic bonds. Okay. Now second will be having hydrogen, third will be having OH, fourth will be having, and here it is having CH2OH. So here we need to discuss the different bonds. So हमने यहाँ पे discuss किया है कि ऐसा sugar molecule is present over here which is bonding with adenine, and this bond, particularly this bond, is known as N-glycosidic bond. So for clearing the space, what we do, that we are just giving it a little bit of space and we are saying that it is bonding, it is bonded with adenine like this. Here it is bonded with adenine like this. So alternating position में यहाँ पे there will be this hydrogen bond having 2 double bond with thymine over here. यहाँ पे दूसरा और thymine होना ही चाहिए क्योंकि ये corresponding bond करेगा. So ये thymine will be having also this structure, this bond like this. So ये हो गया first carbon, this is the second, this is the third में OH group present रहेगा, fourth और and यहाँ पे CH2OH group रहेगा fifth carbon में से. So यहाँ से अगर हम if we visualize this part, then we will be seeing at this position यहाँ पे phosphate भी रहेगा, phosphate में OH, यहाँ पे double bond O, यहाँ पे OH, and here it's also OH. So what is here? Here this, from this also release of one molecule of water. This will be giving the structure like this. Release of one molecule of water, and that would be giving it like this structure. PCH2OH से यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन ग्रुप आ जाएगा and it is giving this. So it is the 5 prime and 5 prime से phosphate, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 5 prime phosphate. और यहाँ से हम देखते तो एक शुगर पार्ट में there is 3. So 3 में हम देखते हैं यहाँ पे OH group is there, so 3 prime OH. यहाँ से ऐसा. So 5 prime में phosphate आता है and this particular this bond, if we see, this bond is known as phosphoester bond.
सो कितना बॉन्ड हमने फिगर्ड आउट किया, पहले शुगर मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन से जो प्यूरिन या फिर पिरिमिडिन होता है उसके लाइक शुगर एंड नाइट्रोजन बेसिस एंड सॉरी वी स्किप दिस पार्ट दैट शुगर and nitrogen base, they will be forming the nucleoside एंड उसके साथ अगर फॉस्फेट आके ज्वाइन करता है दैट इज H3PO4 या फिर PO4 3- जो भी है वो ज्वाइन करता है, देन इट इज फॉर्मिंग द न्यूक्लियोटाइड पार्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझना है, न्यूक्लियोटाइड पार्ट ये समझना है। तो ये वाला बेसिक था, ये मालूम था सबको, ही नॉर्मली मालूम होता है क्योंकि ये बहुत पुराना पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन उतना नहीं आता, बट ये समझना है व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। ओके, सो अगर ये कंप्लीट होता है देन वी विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। चलो फिर थोड़ा सा बॉन्ड समझ लेते हैं किसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है। सो पहले क्या है कि शुगर, ठीक है, ये शुगर वाला जो पार्ट है ना, शुगर दैट इज डीऑक्सीराइबो शुगर एंड उसके साथ जो नाइट्रोजन बेस होता है उनके अंदर जो बॉन्ड होता है दैट बॉन्ड इज नोन एज इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये वाला फर्स्ट बॉन्ड हो गया बिटवीन टू नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेस नंबर 1 एंड नाइट्रोजन बेस नंबर 2, उनके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी यहाँ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएगा, वी विल बी डिस्कसिंग दिस। हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन and thymine having 2 hydrogen bond while guanine and cytosine will be having 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, अभी जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, नाइट्रोजन बेस 1 नाइट्रोजन बेस 2, ये कंप्लीट है फॉस्फो। अभी थर्ड बॉन्ड इज द फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। वो किस में प्रेजेंट होता है? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है 5 प्राइम कार्बन के साथ। जो यहाँ पे देखो 5 प्राइम जो कार्बन के साथ ये जो फॉस्फेट का बॉन्डिंग होता है ना दैट इज नोन एज फॉस्फोएस्टर। अभी रिमेनिंग क्या हो गया, यहां से अगर कोई नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आता है सो इसके बीच में भी एक बॉन्ड होना चाहिए, दैट बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। सो ये कैसे बनता है, यहाँ पे OH मॉलिक्यूल है और नेक्स्ट ऐसे करके यहाँ पे और एक शुगर मॉलिक्यूल आएगा, उसमें भी CH2O, यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव ड्राइंग दिस बॉन्ड इज द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और यहाँ पे HO, यहाँ से फिर से एक OH। तो क्या होगा, ये 3 प्राइम जो OH है ना इसके साथ जो उसका नेक्स्ट जो फॉस्फेट है वहां से भी रिलीज ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल will be giving it this type of bond which is known as this O and this, which is known as phosphodiester. That is very important, phosphodiester bond. So phosphodiester bond, this is the fourth type of bond where it is found. Diester bond, it is found at the 3 prime carbon with next phosphate. ठीक है, with the next phosphate of next nucleotide ऐसे बनता है। So it is making this chain ऊपर से नीचे तक, it is making here, it is making here with two up and down nucleotide, it is making this chain. So now these are all clear I think. Now different questions are come. So कैसे होता है, like this, if I make this adenine, यहाँ से डबल बॉन्ड थाइमीन, ये आ जाएगा इधर like this. Now when we will be moving from up to down region, now here
there will be this bond, oxygen, this phosphate, the 3 prime, this is the 3 prime. Now here if we contribute with this C, suppose here if we go for guanine, so it will be having triple hydrogen bond with cytosine, so it would be having inverted sugar like this, and again and again. So first it will be having this phosphate, this will be still bonding with this, so this is the group, this is the structure, this is the first carbon, second, third, fourth, यहाँ पे एक fifth carbon present होगा, that fifth carbon is bonded with the phosphate and again it is bonded with the third, so it is maintaining the DNA like this helical loop structure. So now this is the structure of DNA that we are saying, the chemical, the core chemical component of this. Now questions are come like this. Suppose one question is there, in a double stranded DNA, if 20% adenine is there, then how much amount of other, suppose there is other this elements or other nitrogen bases, ठीक है. So question ऐसे आया. So now if we can say that the total, if here adenine, here adenine, here adenine only present, so the corresponding part will be occupied by thymine. It must be having thymine, as we know that adenine only bonds with thymine. So the number of adenine will be equal to the number of thymine, and at which position the guanine will be present. Suppose here guanine is present, so the corresponding position will be occupied by cytosine, so the number of guanine will be equal to the number of cytosine. So if adenine percentage is 20%, then thymine percentage will be 20%. And if adenine plus thymine is equal to 40%, then the rest amount from 100 minus 40, the rest amount, it is 60%, will be occupied by guanine. Now the guanine number is equal to cytosine number. This 60% will be occupied by guanine and cytosine. Now guanine number is equal to cytosine number, so individually guanine will be 30% and cytosine will be 30%. This question is based on Chargaff law, who told that adenine double bonds with thymine and guanine triple bonds with cytosine. And he also told that the molar amount of purine will be the molar amount of equal to the molar amount of pyrimidine. Let's calculate this, the molar amount. Purine, what is the molar amount? Adenine plus guanine. Pyrimidine, what is the molar amount? Thymine plus cytosine. Now adenine percentage is what? Adenine percentage is 20%, guanine percentage is 30%, thymine percentage is also 20, cytosine is 30. So here it is 50%, here it is 50%. So this is total, the molar amount of purine is equal to molar amount of pyrimidine. So now we will be moving toward the next question. Wait, just now next question is coming with respect to phosphodiester bond. Now what we have this between two nucleotide, if it is a double stranded DNA, okay, so between two, suppose this is a strand, this is a strand, between two nucleotide, one phosphodiester bond, so this is nucleotide 1, so it is nucleotide 2, ऐसे करके there will be n number of nucleotide. So in a double stranded DNA, if
two nucleotides is there. So between two nucleotide there is one phosphodiester bond. So if it is 3 nucleotide then 2, if it is 4 nucleotide then 3. So the total number of phosphodiester bond is equal to n minus 1 if n is the total number of nucleotide in one strand. So if in one strand the total number of nucleotide is 1, then the total number of phosphodiester bond will be n minus 1. So there are total 2 strands. So total it will be 2 into n minus 1 in डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्योंकि एक स्ट्रैंड में अगर n-1 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हुआ तो दो स्ट्रैंड्स मिला के कितना हो जाएगा 2 into n-1 आ जाएगा. So it would be the total number of phosphodiester bond in a double stranded DNA. Suppose अगर आता है कि in one strand the nucleotide number is 10. So total number of phosphodiester bond कितना हो जाएगा 2 into 10 minus 1. So 9 it is will be having 18 phosphodiester bond. So ऐसे भी question आता है with respect to this. Now we will be discussing other parts. I told that I will be making this separate series, but it is unable as the video limit is crossed. So we will be going for next part with respect to basic of carbohydrate, basic of this lipid, and then we will be going for the competitive question series regarding these four biomolecules. So then till then stay tuned, and it is a humble request to each and every one that please subscribe and like my channel. Okay, wish you a good day, and as well as stay healthy, fit this during this pandemic time. We are trying, we all education fraternity is trying their best to give you much valuable content for your more increasement of your knowledge. Okay, so stay tuned with us. Thank you for watching.